Good morning, young people. This is the second session that we are doing for you for the class that you missed out on the 9th of November. Basically, I'm going to give you a little bit of an assignment in which one is that it's going to be my own video, which is going to be short, maybe 10 minutes. And then it's going to be one or two other videos that you would need to watch. And then there would be an article which would be in MS Word, which is from the Harvard Business Review. It's all about changing of the mindset. The topic that we're going to be talking about today is organizational change and managing stress, right? Before we get into the subject, I'm going to share a screen with you and show you some of the things that are there, which I feel that, may make it a little clear for you on what we want to do today. Okay? So what we're going to be do today, let us go back to the beginning, which is something like, let's go. Maybe I've opened the wrong one. No, this is not the thing that we need to be doing. Okay. सबसे पहले तो okay, let us share screen. And on sharing a screen, let us look at what we want to do. Okay, I think this is what I want to do with you, and let us start from the very basic beginning. Okay. First of all, I want to talk to you about what is change. When in the class I mentioned change, somebody said doing it like this and doing it like that. Change is not doing something differently. Today you're sitting at the back and tomorrow you want to sit in the front. That's a change. But that's not the change that we're talking about. We're talking about the organizational change. And for that, what I'd like you to understand is that change in any organization, whether it's your college or a bank or a restaurant or a hotel, it could be a planned change or it could be an unplanned change, but these changes happen in response to the need of the business. When the customers' needs are changing, when the competition is there and all that is there, the needs of the business, we need to go for a change. Now, change you need to understand is basically an attitude. It's a state of mind, a stance that is adopted to make an organization better and more streamlined and more productive. You get the picture? The change is something which is adopted to make your organization better and more streamlined and more productive. Now, it's basically a process which is moving from your present situation to the desired future situation. Your organization maybe today is number 7 or number 5 or number 8 in your industry. You want to take your organization to number 1. So what you do is you go through this process of moving from the present situation, bringing in the necessary changes and so on and all that to a desired future situation, which is possibly number 1 or number 2, or whatever. So you get the picture. So change sometimes can result from outside, sometimes can result from inside. It can be in form of new competition. K&N comes up with new product, you got to go ahead. Hilal comes up with a new product, Candyland got to come up with something. Tapal is coming up with new ideas on tea and all that, so Lipton's got to come up with. So all these things, it could be new competition, or it could be new technology. We do understand that the technology has been changing very fast. From the handwritten thing and all that in the last century, we moved toward automation. And today we're moving into what you call is the era of the artificial intelligence.
The technology is changing. So we need to. Then there is the new social values, which we talk about. There's things like what fitness. They think about environment. They think about caring for the animals and so on and all that. And then there's also things like the new fashions and all that. When the fashions change, obviously, if you're in the fashion industry, you're going to change with it. Whether it's a color scheme, whether it's the form, it's a design, or whatever you need to be. Sometimes it's the new business practices, which, for instance, we saw that most of the organizations, with the beginning of this century, adopted to e-commerce. And the ones who did not adopt to e-commerce were left behind. But then there is also another very important thing, which is the changing in the nature of workforce. People like me, people like even the Generation X, they they entered the computer age sometime in the end of last century. The world of internet and all these things came to them sometime in the 90s. But as far as your generation is concerned, you've been born in the age of the information technology. Now, if either your generation or the generation Y, if they have entered business and they're over there, can we go on with the same way of working as we were doing when Gen X or baby boomers were there? So the world is changing, we need to change with it. Okay. Now let us get on to what you call is the next one, which is this is my basic thing, and I keep telling everyone, people all over, that today we need to be the leaders of change. If you lead the leader of change, then you're going to be the leader in your business. You get the picture. If you change after the other organizations have changed and all that, then you can't be the leader. So let's talk about you need to be the leader in your business of change. Now, excuse me, change has been the norm of society that we live in. This is something that you are. You keep hearing the slogan, change or die, or change or die. Well, the world around us continue to change, whether you like the change or you do not like the change. Many people in my generation do not like the change. I mean, they're very much against it. But the fact is, can they stop the change? My favorite thing, which comes from Tom Peters, it says, Tom always says, it's no longer your father's world. So I basically believe that it's no longer a father's world, it's a new world, and we got to be adapting to it. Now, why change is important to us? As I said, change is with us. Whatever your organization is, change is there. You have an option. You change reactive as a reaction to the change that the competition and the other organizations have made when you have absolutely no choice, right? Second is you change in proactively by anticipating the needs of the future in advance. You say that the world is changing, the people are changing, and the technology is changing. Those kind of a thing. What are the changes we need to adopt? So when you do that, you obviously are the change leaders. But then there is also a class of business that we have in our country. These people think, oh, let's ignore the change. And it will go away. ऐसे ही टेम्पररी ये चला जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं. लेकिन चेंज तो नहीं जाता है. चेंज जाता नहीं है, वो वहीं का वहीं बैठा रहता है, और ये जो है फिर होते रहते हैं. अच्छा, अब एक और चीज समझ लें before we get on to more of the talk. Change has always been there with us since this world started. What has changed in the new millennium is the speed and quantum of change. एक तो रेत जहां एक चेंज आता था वहां 1000 चेंज, और जहां चेंज को 5 साल लगते थे आज उसको 5 हफ्ते लगते. So this is the speed and quantum has multiplied 100 times. And I quote from Peter Drucker, who's the father of modern management that you study.
He says the talk that you hear about adopting change is not only stupid, it is dangerous. The only way, the only way you can manage change is to create it. And when you catch up with change, it's like this that say, no, 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 I'm waiting for the other organization. So when you go and catch up with the change, your competition is already ahead of you. Why? This is all about change. Now, let us get to the next part, which is there is resistance to change. There is a resistance from change from the individuals, and there is also the resistance of change from the organization. जहां तक इंडिविजुअल्स का सवाल है जी, वो एक हैबिट में है, उससे निकलना नहीं चाहते. दे फील सिक्योर इन द वे वे दे बीन डूइंग थिंग्स, क्योंकि उनको उसमें एक्सपर्टीज सब कुछ है. और मेरे साहब वो ये भी डरते हैं कहीं ये चेंज हुआ वगैरह, कहीं हमारी नौकरी न चली जाए, कहीं हमारी तनख्वाह ना कम हो जाए, कंप्यूटर्स आ गए हैं तो हमें वो नहीं रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, हमारी जरूरत नहीं रहेगी. फिर उनको एक बड़ा जो फियर ऑफ अननोन है, और सबसे जो बड़ी उनकी प्रॉब्लम है, वो चेंज को पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं करते. व्हाट दे डू इज दे सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, दो चीजों को समझ लिया लेकिन बाकी पूरी तरह समझते. जब पूरी तरह नहीं समझेंगे तो किस तरीके से उनको चेंज का फायदा मालूम. इसी तरीके से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वो अपने उसमें इनर्शिया में अपने पास में फंसे हुए हैं कि जी हमारा बाप भी ऐसे करता है, दादा भी ऐसे करता था, और हम तो बड़े जबरदस्त, हमको बदलने की क्या जरूरत. समझ गए? अब वो उससे निकल के नहीं आते, और उसकी वजह से कंपटीशन आता है, चेंजेस आते हैं, आगे लोग चले जाते हैं. अच्छा, फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ये है कि वो जब चेंज हो रहा है तो भाई चेंज एक घड़ी की तरीके से है, जिसमें एक गिरारी आप नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि एक गिरारी को आप चेंज करेंगे और बाकी को नहीं करेंगे तो घड़ी तो टूट जाएगी. अब उनका ये होता है कि उन्होंने थोड़ी सी जरा चेंज डाल दिया लेकिन बाकी नहीं डाला, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लैश होता है, प्रॉब्लम होती है. फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर भी बड़ा होता है, नहीं 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 नहीं, हम तो बड़े एक्सपर्ट हैं, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो फिर वो डरते भी है कि जो हमारी एक्सपर्टीज हमने आज तक बनाई है, लोगों को बड़ा वो किया हुआ है कि हम तो सब कुछ जानते हैं, अब ये नए बच्चे आ गए, नए टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम तो पीछे रह जाएंगे. फिर उसके बाद जब हम पीछे रह जाएंगे तो हमारी जो पावर रिलेशनशिप है वो भी बहरहाल क्या कहते हैं वो हो जाती है. तो इन सब हालात के अंदर बेसिकली होता यह है कि दीज पीपल रेजिस्ट टू चेंज. ठीक है ना. नाउ आई विल स्टॉप दी स्क्रीन शेयरिंग. नाउ आई टॉक टू यू अबाउट अ फ्यू थिंग्स कि जब कभी भी कोई चेंज आता है वगैरह, तो बहरहाल क्या कहते हैं आपने उसको किसी न किसी तरीके से तो करना है. रेजिस्टेंस होती है, लोगों को आपने समझाना है, लोगों को आपने एक्सप्लेन करना है, लोगों को ये बताना है कि ये चेंज जो है उनकी बेहतरी के लिए है. इस उससे बिजनेस को भी बढ़ेगा, जब बिजनेस बढ़ेगा तो उनकी भी क्या कहते हैं उनकी भी तनख्वाहें, बोनस, सारी चीजें बढ़ेंगी. इसमें बहुत सारे तरीके उन्होंने बताए जो हमने आपकी किताब में डिस्कस किए हैं, लेकिन उसमें दो तरीके हैं जो एक थोड़े से वो है, लेकिन कभी कभी उनको इस्तेमाल करना पड़ता है. एक तो है कि मैनिपुलेट करें आप लोगों को, और फिर उसके बाद आप कुछ लोगों को अपने साथ मिला लें और उसके बाद आगे चलें. एक और जो है वो है कोerशन, यानी आप लोगों के ऊपर फोर्स यूज करें. तो बेसिकली जब कभी भी आप फोर्स यूज करते हैं तो टेम्पररी होता है, लेकिन अक्सर हालात ऐसे होते हैं व्हेन यू प्रेस फॉर टाइम एंड सो ऑन एंड ऑल दैट, so at that particular time you don't have a choice. So what you do is you like to go for the thing. अच्छा, अब इसमें दो मेथड्स हैं जो बड़े पॉपुलर हैं. एक लेंडन साहब का है जो वो कहते हैं कि जो भी सिचुएशंस है आपने उसमें से लोगों का जो जो भी माइंडसेट है, जो कुछ है, आपने पहले तो उसमें जो कुछ है उसको आपने उसमें से निकालना है. वो कहते हैं जी आपने इनकी जो थॉट जो फंसी हुई है आपने उनको अनफ्रीज करना है, और जब आप उनको अनफ्रीज कर दें तो उसके बाद आपने वहां पे नई थॉट्स डालनी है. समझ गए ना. और उसके बाद तीसरा वो है जब आपने नई थॉट्स डाल दी, नए सिस्टम डाल दिए वगैरह, तो फिर आपने उसको रूल्स में, प्रोसीजर में, चीज के अंदर कन्वर्ट करना है. तो उनका बेसिकली कहना यह है कि देर इज अनफ्रीजिंग, मूवमेंट एंड रीफ्रीजिंग. ठीक है ना. अब उन्होंने
इस तरीके से इसको किया है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी जो है वो ये है कि रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस होती हैं और ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं। तो आपने जो करना है, आपने ड्राइविंग फोर्सेस को ज्यादा एम्फसाइज करना है और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस को आपने सप्रेस करना है। सो दिस वे यू आर एबल टू गो द चेंज। दूसरे क्वार्टर साहब हु सपोज टू बी दी मास्टर ऑफ चेंज द वर्ल्ड ओवर, इन्हीं की किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने अपने 8 वो दिए हैं, लेकिन उनके जो 8 वो हैं उनको भी अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करें तो उसके अंदर भी वही वही चीज है जो है, पहले अनफ्रीजिंग है, फिर मूवमेंट है, और फिर उसके बाद फ्रीजिंग है। ठीक है, यू नीड टू स्टडी दोज। क्वार्टर साहब का जो है आपने पढ़ा है क्लास के अंदर उसके ऊपर। अच्छा, हाउ एवर वेन एवर वी ब्रिंग इन चेंज, तो चेंज के अंदर बहरहाल स्ट्रेस आती है, समझ रहे आप? क्योंकि लोगों से आप कहते हैं आप चेंज करो, तो कोई भी चेंज आप उनसे करने कहते हैं कि वो उनकी वो हैबिट है कोई है, उसकी वजह से वो, चूंकि वो नहीं उसको कंफर्टेबल होते, अपने कंफर्ट जोन से उनको निकलना पड़ता है, तो दे गेट स्ट्रेस्ड। अच्छा, इसमें छोटी सी चीज, वंस अगेन आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू, आई वांट यू टू वॉच अ पर्टिकुलर स्लाइड। और ये जो बेसिकली स्लाइड है, इसको अगर आप देखें तो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। कहाँ गई भाई, मैं तो समझे। अब इसमें जनाब वाला, हाँ, दिस इज द स्लाइड दैट आई वांट यू टू लुक एट, आई होप यू कैन सी इट। व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज दैट नॉट स्ट्रेस इज बैड, ऑल स्ट्रेस इज बैड। देखिए, अगर जिंदगी में स्ट्रेस नहीं होगी, कोई स्ट्रेस ही नहीं होगी, तो आप तो पड़े सोते रहेंगे, समझ गए ना? कोई स्ट्रेस ही नहीं होगी तो आपने तो किताबी खोल के नहीं देखना है, आपने कुछ पढ़ना नहीं है। अब चूंकि आपको स्ट्रेस होती है, चूंकि इम्तहान होना होता है, इम्तहान में नंबर मिलने होते हैं, ग्रेड मिलने होते हैं, तो वो स्ट्रेस होती है। तो वो चूंकि स्ट्रेस का ये है कि जब स्ट्रेस बिल्कुल टोटली लो है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी लो रहती है, समझ गए ना आप? अब जैसे आप इस ग्राफ के अंदर देख लें, स्ट्रेस लो है तो परफॉर्मेंस भी आपकी लो। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेस बढ़ती है, आपके लिए इंपॉर्टेंस बढ़ती है कि मुझे उसमें अच्छे नंबर लेने, सब कुछ करना है, तो उस वक्त में आके आप ज्यादा मेहनत करते हो और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। लेकिन इसको इस तरीके से भी समझ लें, अगर किसी तरीके से हम आपको ओवर स्ट्रेस कर देंगे, जो जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं है स्ट्रेस बर्दाश्त करने की, तो उन उन हालात के अंदर जाके होता यह है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहरहाल गिरने लगती है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। नाउ लेट आई विल स्टॉप शेयरिंग। वंस अगेन आई एम बैक विद यू। स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल करना है, ये हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया है, और कल जो क्लास होने वाली है उसमें भी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राउंड अप, एंड what you need to do is you need to answer some of the questions that are going to be given to you from whatever I talk to you about, from the videos that I have uploaded and the article that I have uploaded. Thank you very much. Have a nice day, and inshallah, we will meet you in the class tomorrow. Thank you.